Good morning to my dear students. Students, as we are discussing the chapter sexual reproduction in flowering plants, so students, I want to tell you that sexual reproduction occurs in three different stages, and these stages or these events are referred as pre-fertilization event, fertilization, and post-fertilization. Means in pre-fertilization events, the process of gametogenesis as well as gamete transfer occurs, while fertilization means fusion of two gametes, and the all events or all the stages which are going to take place after the process of the fertilization are referred in post-fertilization events like embryo formation or embryogenesis. Now I'm going to start from the very first one, pre-fertilization event. So as I mentioned earlier that pre-fertilization events involve gametogenesis and gamete transfer. So initially I will talk about gametogenesis. So students, as we know that male gamete are generally called as microspores, or these are located inside the pollen grains, and the pollen grains are synthesized in the stamen. So initially I will tell you the structure of the stamen, and I will tell you that how the microspore or the male gamete forms inside the stamen. Now here in the picture you can observe that what is the structure of stamen. You are observing that in a stamen two structures are appearing. The topmost bilobed structure is there, which is called anther, and it is attached with a long cylindrical part, and this part is called as filament. So here in the picture you can see that what is anther and what is filament, and you have also the transverse section of anther 2. So here you can see or you can observe the internal structure of the anther. Later on I will discuss in detail. So students, as we know that angiospermic anther, because any flowering plant, uh, any plant which is having flower can be referred as angiosperm. So while we are observing the structure of the anther, as you mentioned, as you observed it in the previous slide कि what is anther and what is its structure. तो अगर आप anther का structure देखते हैं तो you will find out that कि each anther is dithecous. Dithecous means initially you can observe that there are two lobes in each anther, and each lobe contains two thecas. Means here in the picture you can see that anther is a bilobed structure, and each lobe is having two theca, and a longitudinal groove is also running lengthwise and separating these two thecas. So here in the picture, here in this picture, this is clear that there are two lobes, and in each lobe there are two thecas, and these thecas are separated with a long groove. Understood? Now in next slide you can see that here in this picture uh, there are two lobes, and each lobe is separated by theca. Understood? And I am coming to the next slide. In this slide the picture is more clear. Structure of an anther you can see here. In the first picture you can see that what is filament, what is anther, and you are observing there are two lobes, and each lobe is having two spherical structures. Actually these spherical structures are microsporangium, and which are representing the specific theca, and longitudinally it runs throughout the length of the anther. Now there are few more terms related to the anther, so I will tell you later on. तो फर्स्ट टर्म एंथर इज डाइथीकस. डाइथीकस मीन्स अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर. ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है और हर एक लोब के पास टू थीका है. दैट्स माई इट इज कॉल्ड एज डाइथीकस. The anther is a four-sided structure. Now here in this picture you can see that in this picture you can observe that कि anther जो है tetragonal structure है. It has four sides. ठीक है, and at four corners you can see that ki four microsporangia are located at the four corners. तो you can be confused. तो आप देखेंगे कि हर एक कॉर्नर पे एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर है. दिस स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजियम. सिंगुलर फॉर्म में से माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं, बट दीज आर फोर इन नंबर, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया. यानी ईच कॉर्नर कंटेन्स फोर, each corner contains one microsporangia, and there are total four microsporangia. It means two in each lobe.
ओके, लेटर ऑन जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, दीज डेवलप इनटू द पॉलन सेक्स एंड दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली एंड आर पैक्ड विद द पॉलन ग्रेन्स। तो आप देखेंगे कि एंथर में, अगर मैं फर्स्ट स्लाइड दिखाऊं आपको, तो आप देखेंगे कि ये थ्रू आउट द लेंथ आपका माइक्रोस्पोरेंजियम आपका लाई करता है, एंड दिस इज़ द साइट फॉर द पॉलन प्रोडक्शन। नाउ हाउ इट प्रोड्यूसेस पॉलन, आई विल टेल यू दैट कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है वो कैसे आपका पॉलन बनाता है। तो एज आई मैंशन अर्लियर कि ई anther is a four-sided structure. It is a tetragonal structure and each corner contains one microsporangium, and this microsporangium further or in future it develops into pollen sacs, ठीक है, which are finally packed with the pollen grains. Now I am talking about the structure of the microsporangium. Now here in this picture you can say that कि जो आप microsporangium है, it appears in a circular outline. You can see that कि it appears in a circular outline and it has four layers of the cells. इसके पास cells की four layers होती हैं. The outer layer is called epidermis, then the second layer is endothecium, then middle layer, and the last one layer is called tapetum. Understood? You can see in the picture epidermis, endothecium, middle layer, and tapetum. So there are four, each microsporangium there are four layers of the cells which are called as epidermis, endothecium, middle layer and tapetum. Now what are their functions? The outer three layers, what are these three outer layers? Epidermis हो गई, endothecium, middle layer. These are protective in nature. मतलब ये आपके पॉलन को या जो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले माइक्रोस्पोर्स हैं इन्हें प्रोटेक्ट करने का काम करेगी. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द डाइहाइसेंस. डाइहाइसेंस मीन्स व्हेन द एंथर बस्ट, यानी एंथर जब फटता है और आपका पॉलन जब रिलीज होता है, इस इज कॉल्ड डाइहाइंस. तो डाइहाइंस की प्रोसेस में भी हेल्प करती हैं. वहीं जो इनर मोस्ट लेयर है, दिस इज कॉल्ड टैपेटम, एंड टैपेटम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन. यानी जब पॉलन ग्रेन बनते हैं, वो मैच्योर हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे टैपेटम इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है. नाउ द सेल्स ऑफ द टैपेटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म. आप देखेंगे कि जो टैपेटम की सेल्स हैं, कुछ सेल्स हैं, ठीक है, दे आर डेंस इन साइटोप्लाज्म, मतलब इनका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है. एंड जनरली दे हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, और इनके पास कभी कभार एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है. एंड दीज आर कॉल्ड एज स्पोरोजीनियस टिश्यूज़. तो इन सेल्स को हम अब क्या बोल देते हैं? स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ बोल देते हैं. एंड दीज स्पोरोजीनियस टिश्यूज़ आर अंडरगोइंग मियोसिस एंड आर फॉर्मिंग माइक्रोस्पोर्स. अंडरस्टूड? तो यही जो स्पोरोजीनियस टिश्यू है, यही स्पोरोजीनियस टिश्यू आपका क्या करता है? डिवीजन करता है और आपके माइक्रोस्पोर्स बनाता है, ठीक है. व्हेन द एंथर इज यंग, three group of compactly arranged homologous cells, the sporogenous tissue occupy as the center at the microsporangium, and these cells of the sporogenous tissue undergo meiotic divisions and form microspore tetrad. नहीं, अब आपसे कोई पूछता है कि what is microsporogenesis, तो microsporogenesis is a kind of gametogenesis, means formation of microspores from sporogenous tissues. तो sporogenous tissue जो है आपके माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बिल्कुल वो मियोटिक डिवीजन करेंगे, मियोसिस करेंगे, और आपके हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर यानी जो कि टेट्राड की फॉर्म में होंगे, इनकी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है. नाउ हेयर इन द पिक्चर यू कैन सी दैट कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. तो सेल ऑफ द स्पोरोजीनियस टिश्यूज दे आर अंडरगोइंग मियोसिस, ठीक है, और इट इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. एंड फोर हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्मिंग. दीज फोर हैप्लॉइड सेल्स विच आर द डॉटर सेल्स आफ्टर द डिवीजन ऑफ मियोसिस स्टे टुगेदर, ठीक है. एंड ये टेट्राड की फॉर्म में होते हैं. एंड धीरे धीरे जो एंथर होता है वो मैच्योर होता है, डिहाइड्रेटेड होता है. तो ये टेट्राड में मौजूद चार की चार आपकी जो सेल्स हैं वो डिसएसोशिएट होती हैं और आपके पॉलन ग्रेन की फॉर्म में रिलीज हो जाती हैं. सो इन दिस वे टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टामेन, the structure of the microsporangium, as well as the process of microsporogenesis. I hope so you understood the concept. Still, if you have any query, please ask. Thank you. Bye bye.